Okay, fine. So this is the discrete mathematics class. So in this we'll discuss some of the questions that is there in the gate. Or okay, so some of the important questions we will discuss right now. Okay, if you have any doubt or anything, then you can ask me immediately. Okay, I think all of you have studied this discrete mathematics in the first semester. Okay, so we'll only discuss some of the questions. And if you need any theory that is to be discussed, then tell me. So I'll discuss that also. Okay. I think only 17 have joined. I think many more to be joined. So let's wait for some more minutes. Then I will start the meeting. Okay. Okay. I think we'll start the class. Okay. So I'll give you some of the questions. I think this question I have given to you. So try to solve this one. Okay. So I think basic some of the basic formulas and basic rules that I'll show you first, so that it will be easier for you to do these problems. Okay. Wait a minute. So these are some basic formulas you can use here. Okay, but I suggest you to do it quickly. Sometimes you may need some of the examples
so that will be easier to uh, do it. Okay. Okay. Mhm. So try to solve this one. Okay. Which one of the following predicate formulae is not logically valid? So how to check that whether the particular statement that is logically valid or not? How generally we check it? आई थिंक डीएम हर कोई पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा. एनीवन जस्ट रिस्पॉन्ड. How we check that two statements are equivalent? One method basically by using the truth table. Okay, so one thing you can use that using the truth table, but what happens here there are two statements and truth table is somehow difficult to do it. Okay, that means it takes some lengthy time. Okay, so what you can do, we can have some of the logical equivalences. Okay, so here it is given that for all x px or w. Okay, and w, remember that is the theoretical formula free of occurrence of x. Okay, that means the w that doesn't depend on the this x. Fine. So what you can do here, you have to check that which one is not logically valid. So for all px or w, for all x px w, that is correct. No issue with it because simply for all x, the w is independent of that occurrence of this x. So that's why we can write down like this. Okay. Then next one, that is that there exists x, px and w. There exists x, px, w. So that's also correct. No issue. Okay. So why? Because there exists px and w. That is same as this one. No issue with it. Okay. Then check the next one. Okay. For all x px to w, and it is for all x px to w. Is it correct? Is it correct? Is it correct? Sorry. Is it correct? How to check the equivalences? You know that p then q. This is logical statement. It can be written as here. Okay, here it is there. Okay, logical equivalences involving conditional statements. Okay, p then q. It is also termed as a negation of p or q. So this is equivalent to negation of p or q. So here there is the statements are for all x px to w. Okay, for all x px w. So we have to take a negation of p first. So whenever we do the p then q, we have to split it. In order to do that, what we have to do? What we have to do? We have to take the negation of that. Okay. So okay. So using this formula, what you can do? This is for all x px then w. Going to split this one. Okay. What you can do? This can be written as in this way. For all x, okay, this is px dot w, that can be written as a negation of px or w. Okay, then this can be written as here it is for all x negation of px. So ये जो है इसको हम ऐसे for all x को ऐसे लिख सकते हैं p for all x negation total के हिसाब से बाहर आ जाए, then I can write down here it like this. Okay,
So that is for all x, negation of px और w. ठीक है. So यहाँ पे जब for all x negation of px और w है, so I can see like this one, negation of for all, sorry, what is the negation of for all x? Anybody? Negation of for all x is there exists x. There is. Yeah, there exists x. So what we can do, we can just take the negation here. Okay, there exists x px और w. तो मैं इस फॉर्म में क्यों लिखा हूँ? बिकॉज p देन q इज नेगेशन ऑफ p और q. सो नेगेशन ऑफ मतलब p मतलब जो भी तुम फॉर ऑल ऐसे बाहर है ना, ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए, जो भी होगा इसके अंदर ही रहना चाहिए. सो दैट्स व्हाई negation of there exists x px or w. So this can be written as this negation of there exists x px or w. This can be written as there exists x px to px then w. So this statement is for all x px to w. That is for all. This is not correct. Here that must be there exists x px to w. But here, as you can see, there exists x. If you take again, if you do in the same way, you get for all because negation of there exists is or all. So that's it. This statement is correct. Okay, and B is correct, A is correct, but C is not logically correct. Not logically correct or logically valid. Okay, so that's it. This is the answer. So C is the answer. Any doubt? किसी को कोई No, डाउट sir. है? No. ओके, और किसी को कुछ डाउट है? Very easy question. Which one of the following is a closed form expression for the generating function of the sequence n, where n equals to 2n plus 3 for all n is equals to 0? Okay, these are all the gate questions. Okay, different year gate questions are there. So be focused so that that will be helpful for you related to that placement thing also, and higher eventually you appear for the gate or anything that time also, this type of thing that will be helpful for you. So means be attentive in this class. Okay, which one of the following is a closed form expression for the genetic function of the sequence n equals to 2n plus a? How the generative function look like? जेनेटिव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट? एनीवन? जो सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप थिंग होगा तुम्हारा में, तो सीक्वेंसेस को हम मतलब कि एक जेनेटिव फंक्शन के सीक्वेंस पे जेनेटिव फंक्शन के फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, और उसका क्लोज फॉर्म क्या होता है, किस टाइप के फॉर्म करते हैं. नहीं, ठीक है. So g of x we generally, so here as you can see n equals to 0 to 1 to infinite means n equals to 0 to infinite. Okay, n equals to 0 to infinite, then n into x sorry n into x to the power n, sorry. Okay, n into x to the power n इस फॉर्म में.
Okay. Okay. So here, what is the thing that you have to do? That is summation of n equals to 0 to infinite in place of this a. Okay, in place of this a, just write down the an that you have, that is n equals to 2n plus 3. So summation of 2n plus 3. Okay, 2n plus 3, that is n, and x to the power n, that is x to the power n. Okay, then what you have to do? Okay, so 2n plus 3 into x to the power n. Now try to find out the closed form. Just 1 minute. Okay, so so 2n plus 3 into x to the power n. So what you have to do right now, just solve it. N equals to 0 to infinite 2n into x to the power n. Okay, 2n into x to the power n plus 3 into x to the power n. Okay, 2n into x to the power n, 3 into x to the power n. Okay, okay, then what happens? This becomes n equals to 0 to infinite. Okay, n equals to 0 to infinite, 2 we can take an outside, n into x to the power n. Okay, plus 3 equal to m common into x to the power n. Okay, in this way. Now try to solve this term. Okay, so try to do it, all of you, and all of you try to do it. Okay, तो शांति से बैठने से नहीं होगा. तो ये जो फॉर्म है, इसका समेशन का फॉर्मूला किसी को पता है? एनीवन कोई ट्राई कर सकता है किस टाइप को इसको सॉल्व करते हैं? Sir, 1 upon 1 minus n. 1 minus 1 minus alpha. Which one? So the second Alpha. term. 1 Second term. Yeah, 1 second 1 term is 1 minus. 1 minus x actually. Yeah, that's correct. Because this is in the GP, so the formula corresponding to this, that will be equal to, so here 3 is there, so 3 by 1 minus x. That's correct. But what about this one? You are correct about this one. Then what about this condition? Summation equals to 0 to infinity n into x to the power n. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो देखते हैं.
ओके ठीक है। इसका आई थिंक जिसको यदि पता होगा तो देख लेना। ठीक है, ये एक्चुअल तुम यदि एक्सपांड करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into 0, so 0 plus when equals to 1, then 1 into x to the power x, 2 into x square, 3 into x cube, 4 into x to the power 4, like this it will go on. ये वैल्यू तो तुम्हें पता है 3/1 minus x, फाइन। सो इसका एक फॉर्मूला आता है, तो ये सब फॉर्मूला छोटा मोटा ना थोड़ा बहुत सिंपली याद करने की कोशिश करो, सो दैट कि तुम्हें फट से मतलब सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, अभी तो मैं फॉर्मूला तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए डिराइव कर देता हूँ, बट और ये फॉर्मूला भी तुम्हें बहुत काम आएगा, या तुम लोग किए भी होगे मेरे पहले। सो कंसिडर दिस Sn that is equals to x plus 2x square plus 3x cube plus 4x to the power 4, like this it will go on. Okay, now consider x into Sn. So what is the value? So x into x, x square plus so x हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे, x into 2x square that is equals to 2 into x cube, 3 into x to the 4. So x shift होकर उधर चला जाएगा, like this it will go on. Okay, now just subtract it. Okay, what happens? Sn minus x into Sn. So if you take Sn as a common, so you'll get 1 minus x. So that will be equals to, so x minus 0, so x plus 2x square minus x square, so that is x square. 3 minus 2 is simply x cube, x to the power 4, like this it will go on. Okay, fine. Then now you know what is the summation formula of this one, like this one. So if you take x as a common, so it will be simply 1 plus x plus x square plus x cube, that is equal to 1, and the summation formula for this one, that is same as this one, that is 1 minus x. So x by 1 minus x. So this summation is 1 minus x by 1 minus x, but what we have, whose summation it is? 1 minus x into Sn. That formula is this one, so that's why Sn, the value that will be equal to x by 1 minus x whole square. Okay, so this is the summation formula. So what we got is equals to 2 into a side. Okay, so 2 into the summation of this one, that is equals to x by 1 minus x whole square plus 3 by 1 minus x. So 1 minus x whole square common आ गया, then this becomes 2x plus 3 minus 3x. So this becomes equals to 3 minus 3x, yeah, correct. Okay, so this will be equals to 2x minus 3x equals to minus of x. So answer is 3 minus x divided by 1 minus x whole square. So check here which one is 3 minus x by 1 minus x square. So the D1. So that's why this is the correct one. ठीक है, ओके, कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो अभी। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करता हूँ।
Okay, so this one is also easy one. So try to guess the relation between the numbers and find out the answer. I think it is very easy, so I think you can guess it. All of you try to do it. Option B. Why? Option B. Can you explain? So we have to multiply first 2 into 6, that will be 12, then by Yeah, 5, then 4, then 3, then 2, then 1. yeah, correct. So here it is multiplied by 2 into 6 is multiplied, so 12. Then 5, 12 into 5 multiplied. And then here 4 multiplied, then 3, then 2, then 1 to be multiplied. So that's why this will be given as such. The answer is B. Okay. Then okay, consider this one. Anyone can find out the answer of this? How to find out procedure? Anybody know? Anyone? ठीक है, तो हिंट देता हूँ. फॉर्मर्स थ्योरम याद है? फॉर्मर्स लिटिल थ्योरम. ओके, ठीक है. Like a to the power p minus 1 congruent to dash mod p. ये क्या होता है वैल्यू? कॉन्ग्रुएंसी तो आई थिंक पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, आरडीए में ही तो था. So a to the power p minus 1 congruent to 1 mod p if p is a prime, and for the composite number it is equals to a to the power 5m. A to the power 5m congruent to 1 mod 1 mod. So here if p is a prime, then if p is composite, if p is composite, then we can say that a to the power okay. I think I got disconnected for some time. Okay. Uh, so but most of the time it will be there for the this prime number. Okay. So a to the power p minus 1 congruent to 1 mod p. This is the formula. So how to use this one? That here the prime number is here p. Okay. So we can say that 3 to the power 4 mod 5, that is congruent to 1 mod 5.
Okay. So what we will do right now, just divide 51 by this 4. So 4, 1, 0, 4. Okay. Okay. So this happens 3, 3. So the remainder is 3. So right now what I'll do, 3 to the power 4 into 12. Okay. So into 12 means 3 to the power 4 to the power 12 mod 5 is congruent to, okay, 1 to the power 12, okay, mod 5. Then this happens 3 to the power 48 mod 5, that is congruent to 1 mod 5. okay. फिर भी अभी 51 है, इसका तो और 3 ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 3 to the power 48 into 3 to the power 3, okay, mod 5 is congruent to 3 to the power 3 mod 5. Okay, so this happens 3 to the power 8, that is congruent to 1, so that's 1 into 3 to the power 3. Okay, so that's why 3 to the power, when 48 plus 3 is added, so 3 to the power 51 mod 5 is congruent to okay, so 27 mod 5. Okay, so 27 is 2 over here. So 3 to the power 51 mod 5 is congruent to uh, 2. Okay, 2 mod 5. Fine. Okay, so that's why the answer is the value of 3 is 2. Okay, if it is asked that, they have to take this polynomial. Okay, in this way you have to do. किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी में? कोई डाउट नहीं है, या इसको अलग तरीके से भी कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन यू डिवाइड 3 to the power 99 by 5, what was the remainder? Okay, so this type of question may be okay, so there are two types. One is this way of writing, is the find the remainder when you divide any large number by any just a small number. Okay, okay, fine. So let us go to the next question. Okay, so consider this question. All of you, first
you try to think over it, then I will explain. First of all, read out the question clearly. Okay, all of you. कोई पार्टिसिपेट उतना अच्छे से नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, तुम लोग उस तरीके से सोचो। ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट को देखो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाए। ये जो स्टेटमेंट दिया है, पहले अंदर वाला जो स्टेटमेंट, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, कौन सा चीज़ों को ये सिग्निफाई करता है, पहले अच्छे से देखो। कौन सा नंबर वो सिग्निफाई कर रहा है? Anyone? Okay, ठीक है, just try to think that this one. So here it is given that for all x, हमारा सेट में for all x जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, there exists a z, z will be there such that z equals to x or z equals to 1. Okay, so what does it mean? That for all x, all z, जो भी जो z है, z, if z divides x, then the z either z equals to x or z equals to 1. इसका मतलब किसका डेफिनेशन लग रहा है, थोड़ा सोचो तो। अरे कोई भी पहचान नहीं पा रहा है? ठीक है, ठीक है। सो S1 S2 S3 क्या क्या है बोलो तो। यहाँ पे देखो, ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे इंटीजर्स है। कौन सा इंटीजर ऐसा है सच दैट फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल जेड देयर एग्जिस्ट इफ जेड डिवाइड्स एक्स। ओके, जेड डिवाइड्स एक्स, इसका मतलब तुम्हारे सेट में कोई भी देयर एग्जिस्ट जेड, कोई एक एलिमेंट लोगे, इफ दैट वन डिवाइड्स दिस एक्स, ओके, then z either z equals to x or z equals to 1. इसका मतलब कि इसके जो फैक्टर्स पे z divides x means what? So जो फैक्टर्स रहेंगे, either the factors that will be dividing that will be equals to x means okay, z equals to x and z equals to 1. So that means there are only two factors. Sorry, x has only that means it has only two factors, either that one itself or z equals to 1. That means this is the definition of a prime number. Because a prime number is such a number, that means for all x, for all z, there exists a z such that sorry, that means z, if z divides x, then either z equals to x or z equals to, okay, so this is the definition of a prime number, if you remember it. then इसका मतलब ये यदि सेटिस्फाई हो गया, then there exists a w greater than x. तो यहाँ पर जब भी हम z डिवाइड्स x का बात करते हैं, so यहाँ पे either z is a multiple of z is a divisor of x
or that means z equals to x और divisor that is 1. Okay, so x से बड़ा और कोई नंबर हम लेते हैं that is there exists w such greater than x such that for all z for all z. Okay. So here you have to take any w that will be greater than this x and the satisfying the same condition. That means here it is saying that if you have a prime number, then you can find out a prime number greater than the x. Okay, ये स्टेटमेंट का ये भी नहीं है, ये भी सेम स्टेटमेंट है, यहाँ पे तुम देख सकते हो for all z for all z if z given w equals to z given w equals to the same statement. That means okay, so here a divides okay, so वो तो बता दिया. Okay, so consider the following fact, this one. So s1 equals to 1 to 100, s2 equals to 1 to s2 equals to 1 to infinite, only positive numbers. Next one is the set of the integers, that is minus infinity to plus infinity, any number you can take. Okay, so okay, so which of the above will satisfy the equation? Anyone? Just try to find out the answer. ठीक है, एक एक करके मैं पूछता हूँ. क्या जब S1 है, are you listening or not? All of you. Are you understanding? Yes, sir. Okay, fine. और कौन? बाकी तो सुन रहे हो ना? या किसी को कुछ डाउट है कोई पोर्शन में तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, देखो हम यदि S1 को कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, इसमें से लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तुम्हारा? 97. 97 के बाद तो कोई लार्जेस्ट नंबर है ही नहीं. सो 97. सो दिक्कत कहाँ पे आता है कि यहाँ पे तो प्राइम नंबर मिल जाएंगे मुझे. फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सच दैट j डिवाइड्स x, दैट मींस दैट z इक्वल्स टू x. सो ये वही कलेक्शन है. ओके, तो ये इसका तो ये प्राइम नंबर पहले बता रहा है, ये इसका मतलब कि हमारे एक प्राइम नंबर मिल गया. राइट नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन दैट. इस मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हमें चेक करना है. दैट मींस w, दैट मींस तुम यदि 98 ले रहे हो या जो भी है. सो x हम कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं. देन w ग्रेटर देन x, there exists w greater than x and ये definition, इसका मीनिंग क्या है? That is a prime number. Okay, so that means we are saying that a larger prime number greater than that 90, मतलब कि इस केस में S1 के केस में क्या 97 से ग्रेटर कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा? No, sir. No. So that means this statement is false for the S1. Okay, so for S2 there are infinite numbers, so obviously if one prime number is there, then again you can find out there exists a w greater than that which is also a prime number. Okay, but in case of any restricted or finite number of elements, you cannot find out any other number that is greater than that. Okay, so that's why for S2 and S3 this statement is true, but for S1 it is not true because of this, because there are only 100 number of elements there, 1 to 100. Okay, so that's why which one is correct? S2 and S3 B is correct. Okay, कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट? ओके, ठीक है.
So next question. Okay, so let P and Q be two propositions. Consider the following two formulae in the propositional logic. This one. Which of the following choices are correct? Which of the following two? So ये सब ये क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा Sorry, you are disconnected. Hello? Yes, Am you I are audible? audible. Yes, you are Okay. audible. Okay, sorry. ठीक है. Okay. So let P and Q be two propositions. Consider the following two formulae in the propositional logic. S1 equals to this, S2 equals to this one. Okay. So what is a tautology? Tautology means the statement that is always true. That is called as a tautology. ठीक है, जो स्टेटमेंट हर टाइम ट्रू रहेगा, मतलब कि वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू दैट इट विल बी ऑलवेज ट्रू. ओके, और जो नहीं है वो नॉट दैट्स नॉट ए टोटोलॉजी. ओके, सो इन दोनों में से तो कौन सा टोटोलॉजी है हर टाइम, हम कैसे चेक करते हैं? वन ऑफ द मेथड दैट इज बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल. ठीक है, ट्रूथ टेबल से चेक कर सकते हो. ओके, या और एल्स लाइक दिस वन माइनस पी negation of p or q देन q. तो इसको हम एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आई थिंक ये इन्फ्रेंस का एक पार्ट है, नहीं मॉडल्स पोनेंस है आई थिंक. तो दैट इज ऑलवेज टोटोलॉजी. ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं. यदि इन जनरल कोई भी फॉर्मूला रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं. एक तो है ट्रूथ टेबल बना के देख सकते हैं, देख लो. ठीक है, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे सॉल्व करना है. तो whichever may be faster for you, then you can use that. Okay, so this one. So p pq is 0 0 1 1 0 1 0 1. Then p और q 0 1 1 1. ठीक है, negation of p that is 1 1 0 0. So negation of p and p और q. ठीक है, so negation of p and that means this two and so 0 1 and 1 that is 1 1 0 0 1 0 that is 0. ठीक है, देन q यहाँ पे. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट दिस देन q. सो तो तुम्हें पता होगा कि q क्या है यहाँ पे. सो 0 देन 0 that is true or false. When the if then statement is false, at one case it is false but all other case it will be true. When the first statement is true, okay, first statement is true but the second statement is false, in that case this is as a result it will be false, but in any other case that is true. ठीक है, so 0 to 0 that is true, 1 to 1 that is true, 0 to 0
that is true. 0 to 0 to 1, that is also true. Only 1 to 1 to 0, that case it will be false. In other case that will be true. Okay, or you can say true or one. So that means it is always true actually. It is always true. So that means it is a tautology. That's correct. That S1 is a tautology. S1 is not a okay. So right now that means from A and B, any one of the option is correct. So we have to check that whether S2 is a tautology or not. ठीक. So ये tautology है या नहीं. सेम वे में इधर ये तो एक बताया कि ट्रूथ टेबल के हिसाब से, और एक मेथड भी बता देता हूँ तुम्हें किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको. Negation of P and P or Q, then Q. So this will be equals to P then Q. So negation of P and P or Q और Q. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया. P then Q is equivalent to negation of P और Q. ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया. So this will be equivalent to negation of this one. So इसका यदि negation करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पे. So negation of P और negation of P or Q or Q. ठीक है, so this becomes negation of P or negation of P or Q, that is negation of P and negation of Q or Q. ठीक है, so P or negation of P, so that is always true, and negation of Q and or P. Okay, so that will be equals to always true. ठीक है, so true and true. That's why it is a tautology. In this way you can solve it. This one method. ठीक है, तो ये सब तुम यदि बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जल्दी तुम कर पाओगे. यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए मैं धीरे समझा रहा हूँ. ठीक है, ओके फाइन. सो नेक्स्ट इज क्या था. सो Q then what a minute. Q then negation of P and P. ओके, सो इसका तो हम यदि ट्रूथ टेबल के हिसाब से देखेंगे, ऑलरेडी हम लोग हमारे पास है ये ट्रूथ टेबल. देखो इसका क्या है 0 1 0 0. इसका जो ट्रूथ टेबल है 0 1 0 0. ठीक है, और इसका क्या है 0 1 0 1. ये वही स्टेटमेंट है ना. यहाँ पे देख सकते हो ये नेगेशन ऑफ P एंड P और Q, नेगेशन ऑफ P एंड P और Q, तो वही सेम स्टेटमेंट है. So this is 0 1 0 1. So 0 then 0, that is 1. 1 and 1, 1 to 1, 1. 0 and 0, that is 1. 1 to 0. In this case it is false actually. So that's why it is not a tautology. यदि तुम ट्रूथ टेबल के हिसाब से देखोगे, otherwise you can solve in that way that I have solved. ठीक, उस पर से सिमिलरली जैसे कि ये वाला Q then. तो 2-3 तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, तो जैसे भी तुम लोग सॉल्व करो. ठीक है, तो एक मेथड है ट्रूथ टेबल, एक मेथड है, और एक है काउंटर एग्जांपल यूज करके. कोई भी काउंटर एग्जांपल तुम्हें जिस दिमाग में स्ट्राइक करके जिसके लिए
ये फॉल्स होगा then also. तो प्रैक्टिस के साथ तुम्हें डिफरेंट तरीका तुम्हें दिमाग में आएगा, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, नेगेशन ऑफ क्यू और negation of P and P of Q. So negation of Q और so ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज करेंगे, negation of P and P और negation of P और Q. So this becomes equals to negation of Q, negation of Q or negation of P and P. So that is always false, 0. और negation of P or Q, that is 0 or this one, so obviously this one only. So negation of Q or negation of P or Q. So this becomes negation of Q or negation of P or ये तो और है, तो और डायरेक्टली लिख सकते हैं negation of Q और negation of P और negation of Q. So ये तो कहीं से लगने रहा है कहीं से टोटोलॉजी होगा या कुछ, that's why we cannot surely say that it is a tautology. We are not getting true. That's all. Fine. So this is not a tautology. So that's why this is the correct answer. S1 is the tautology, but S2 is not a. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, सिमिलर टाइप का और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, so I'm just giving it to you, so you just try to do it. Okay, all of you try to do it. All of you try to do it in the similar manner that I have told you in the previous one. Okay, then I may ask somebody to, okay, to tell me the answer.
कोई सॉल्व किया है इसको? ठीक है, एक एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। P एंड Q देन R, ठीक है। ओके, सो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं देन व्हाट हैपेंस, नेगेशन ऑफ P एंड Q और R, so that becomes negation of P or Sir, option B. option B. That means it is a tautology. Yes, sir. I think that's the correct thing. Okay. So इसको मैं कुछ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वन जो LHS साइड है तुम्हारा, उसका वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। और RHS साइड में देखो, RHS साइड में क्या आ रहा है, P एंड Q सो एक तरीके से इसको पहले सॉल्व करो। Negation of Q or R, then again take the negation of P and Q or negation of Q or R, ठीक है। So that becomes negation of P or negation of Q or negation of Q or R. So negation of Q, negation of Q. So simply I can say negation of Q or R. So यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट है, देखो सेम स्टेटमेंट हियर। That means this is in this type of form, negation of P or negation of Q or R, then same, ये जो भी है स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट हियर रिपीटेड। सो इन दोनों, इसका मतलब कि ये जब ये यदि 1 है, दिस आल्सो 1, so 1 then 1, that is also equivalent to 1, the answer is 1, and if it is 0 then it is also 0, 0 then 0, that is also 1, so that means it is always true, in any of the case it is true, because इसका जो वैल्यू होगा, ये जो भी वैल्यू है, ये भी तो सेम ही वैल्यू है ना, दोनों इक्वल है इसलिए। सो P देन P, ये दोनों इक्वल है, इस तरीके से तो कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए टॉटोलॉजी, बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये समझ में आया या किसी को डाउट है? कोई भी स्टूडेंट को किसी को डाउट है कोई पार्ट में, पूछ लो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करता हूँ। Okay, just think over it and tell me which one is the correct one. So the operator not equals to, whether this is commutative, associative, or commutative but not associative, neither commutative nor associative, which one is the correct one? Just think over it and tell me. Commutative and associative property क्या होता है पता है? If, ठीक है, ठीक है, नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ। Commutative क्या होता है? Commutative means any operator is there, you have, this is a operator, जैसे कि यहाँ पे
नॉट इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, ठीक है। इफ ए स्टार बी दैट इज इक्वल्स टू बी स्टार ए यदि है, then it is commutative. And what is the associative property? कोई बता सकता है associative क्या है? If star B star C is equals to A star B, sorry, रुको, that is equals to A star B star C, then this type of property is called as associative property. So then check and tell me whether this not equals to is a commutative associative है, yes or no. या कौन सा है, या commutative या associative नहीं है, कौन सा वाला ट्रू होता है। ठीक है, कोई तो कुछ बता नहीं रहा है, तो कम्यूटेटिव है या नहीं बोलो पहले, फर्स्ट थिंग whether it is commutative or not. Yes, sir. Yes, sir. कम्यूटेटिव है, ठीक है। सो कैसे पता चला, जैसे कि हम यदि P नॉट इक्वल्स टू Q लिखते हैं, obviously I can say that Q नॉट इक्वल्स टू P, ये टेबल से भी हम देख के आराम से बता सकते हैं कि 0 इक्वल्स टू 0, so 0 and also 0 equals 0 not equals to 0, that is also 0, ठीक है। and 0 not equals to 1, in that case also 1, and 1 not equals to 0, in that case also equals to 1. So these two are, that means P not equals to Q and Q not equals to P, these two are equivalent statements. So that's why we can say that it is commutative in nature. Same case here, ठीक है, that is commutative. Whether it is associative or not, that means what we have to check, that is P not equals to Q is not equals to R. R is any statement you may consider, and is this statement is equivalent to P not equals to Q not equals to R. होता है या नहीं? यदि P Q के साथ इक्वल नहीं है तो and it is not equals to R, and this is same as Q not equals to R and P not equals to that, है या नहीं? ऐसे देखने से तो लग जा रहा होगा या नहीं, ऐसे क्या लगता है तुम्हें, what do you feel, it will be associative or not? Just हाँ, it is associative. Okay, so how to check it? So you can just what you have to do, you just take the table, that is truth table you can use, okay, or simply just logically think that P not equals to Q and not equals to R also equivalent to, so that will be true, okay, दोनों true होगा। So if you want to check it, then you can use any truth table.
ओके देखो ए पी क्यू आर, ठीक है, ये क्या होगा 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। ट्रू को 1 में डिनोट कर रहा हूँ, फॉल्स में 0, ठीक है। 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। So what will be P not equals to Q? P not equals to Q means 1 not equals to 1, that is false, that is 0. That means if they are equal, that is 0. If they are not equal, then that is, in that case, it will be equals to 1. So 1 equals to 1, that is also 0. 1 0 1 1 1 1 0 0 0, so it is also 0 0. Fine. And Q not equals to R, ठीक है, Q not equals to R, so it will be 1 1, that is 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। Then next is these two statements, that is P not equals to Q not equals to R, ठीक है। P not equals to Q not equals to R. So just check these two columns for this. Just check these two, ये और ये दोनों को चेक करो. So PQ not equals to R, that is 1 0 1 0 is 1, 0 0 is 0, 1 1 is 0, 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1, then 0 0 is 0 or cut. Then again P not equals to Q not equals to R, ठीक है। इसको चेक करो क्या आ रहा है. So this becomes is equals to that means we have to check for this table and Q not equals to R, this table and this table, ये दोनों चेक करना है हमें पर दिस वन, ठीक है। सो क्या है चेक करो, ठीक है, अलग कलर में लिखता हूँ. that will be equals 1 1, that is sorry ये 1 0 1 and 0, that is 1 1 and 1 0, ठीक है. 1 and 1 0, 1 and 1, sorry, 1 and 0, that is 1 0 0 0 0 1 1 and 1 1 0 and 0. So check that 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0. These two are, so for here conclude that associative nature. यदि कुछ तुम्हें लॉजिकली सही लग रहा है, थिंक दैट ओके दिस इज करेक्ट, यू डू इट. कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, या तुम्हें और कुछ मतलब कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कैन यूज द ट्रूथ टेबल केस. सो यू नो टू चेक द लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, ठीक है. एनी डाउट? No, sir. Okay, fine. So let's continue.
Okay, consider this question. Which one of the following is not equivalent to P or Q? Okay. Which one of the following is not equivalent to P double implies Q? Okay. P double implies Q का मीनिंग क्या है? P double implies Q. What is the meaning here? P double implies Q is equivalent to P then Q and Q then P. तो डबल इम्प्लाइज का मीनिंग वही होता है कि P then if P happens then Q happens and Q happens then P happens. This is the double implies. ठीक है? Okay. P then Q and Q then P. Okay. So okay. So ये स्टेटमेंट है. अभी चेक करो इसके साथ कौन कौन से इक्वल है. ठीक है, वही सारे इसी के साथ रहेंगे, बहुत सारे ट्रू रहेंगे और जो नहीं है तो नहीं, ट्रू नहीं होगा और क्या. ठीक है, चेक इट. जैसे कि एक स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ, बाकी तुम थोड़ा कोशिश करो. P then Q, इसका और एक स्टेटमेंट हमें पता है कि दिस इज नेगेशन ऑफ P और Q एंड Q then P मीन्स नेगेशन ऑफ Q और P. तो देखो कोई स्टेटमेंट, ये देखो नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, क्योंकि और ऑपरेटर कम्यूटेटिव है इसलिए उल्टा करके लिखा है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये इक्विवेलेंट है इसके साथ. ठीक है, ये इक्विवेलेंट. ठीक है, और कौन सा इक्विवेलेंट है? और भी डायरेक्टली दिख रहा है तुम्हें और इक्विवेलेंट है कि नेगेशन ऑफ P और Q, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिर्फ पहला वाला को चेंज करेंगे, दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q एंड देन इसको जैसे है वैसे रहने देंगे Q देन P, तभी भी जाके ये ट्रू होगा. तो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट. ठीक है, दे क्या ये इक्विवेलेंट होगा या इन दोनों में से कौन सा नॉट इक्विवेलेंट होगा? तो इसका मतलब कि ए एंड बी आर करेक्ट, इक्विवेलेंट है. तो अभी इन दोनों में से सी एंड डी के बीच में से कोई होगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा. ठीक है, एक काम कर सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल वाला ले सकते हो या लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो. एनीवन? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह याद है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, देखो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q. एंड ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करेंगे, तो एंड नेगेशन ऑफ Q और negation of P or Q and P. So ये distributive property over the and sign. Then again use this negation of P, यहाँ पे and है तो and negation of Q और Q and negation of Q.
और negation of p and p, ठीक है, और इस ये और है जो q and p, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये तुम्हें पता है, q and negation of q that is always false and negation of p and p that is always false, क्योंकि एक यदि ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है, कोई एक भी फॉल्स होने से एंड ऑपरेटर फॉल्स हो जाता है, तो दैट्स व्हाई दिस टू आर फॉल्स। तो यहाँ पे तो और है, ठीक है, तो और है मीन्स दिस बिकम्स नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q, और यहाँ पे q एंड p है तो आप p एंड q लिख सकते हो, कम्यूटेटिव है। सो दिस वन इज दिस स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q और p एंड q। सो ये डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बचा कौन सा है, हमें पता है कि ये चारों, ये तीनों करेक्ट है, तो ऑब्वियसली एक ही स्टेटमेंट बचता है कि दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, ठीक है, तो यही तुम्हारा फॉल्स है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। सो आंसर इज सी, ठीक है, कोई डाउट है? सो बेसिकली तुम कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो है जितना याद रख सको रख लो, तो तुम्हारे लिए बेटर है, और क्या, या नहीं तो कुछ काउंटर एग्जाम्पल इधर से सोच सकते हो, इन दैट केस आल्सो दैट इज गुड। ओके, So the questions will be like the MCQ ones. हाँ, क्वेश्चन विल बी इन दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू टाइप। ओके, तो ये सब छोटा मोटा ट्रिक्स है, छोटा मोटा एक करके देख लो, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट यूजिंग दिस क्वांटिफायर से यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स दैट एग्जिस्ट एक्स, सब क्वांटिफायर से यहाँ पे। ओके, ओके, ट्राई टू डू इट। ओके, ठीक है, तुम लोग तो कुछ आंसर नहीं दे रहे हो, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सो दिस वन इज okay, which one of the following is found formally is a tautology? So tautology के लिए क्या होना चाहिए, जब if and only if है या जो भी है उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि for all x there exists a y, rxy double implies there exists a y for all x rxy। क्या ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है?
क्या ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है? हम्म? ठीक है, एक काम करो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आर एक्स वाई को डिफाइन करता हूँ। एक्स इज मान लो ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो यदि हम पढ़ेंगे यहाँ पे फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या ये ट्रू है? दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट x is greater than y. That's true. Yes or no? Yes, sir. That's true. Because इसका मतलब यह है कि हम मतलब कि हमारे पास मतलब फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक्स हम कंसिडर करते हैं, मे बी 5 और 6 व्हाटएवर इट मे बी, देयर एग्जिस्ट y such that there exist y means maybe 3 exist कर रहा है just such that 5 is greater than 3. So that's why this is true. Okay, but this statement, what is the meaning of this statement? There exists y for all x such that rxy. That means there exists y, that means there exists y 5 for all x such that 5 is greater than y. मतलब कि ये तो कुछ स्टेटमेंट में फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि y यदि हम 6 ले लें तो फॉर ऑल एक्स के लिए तो ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ओ सॉरी उल्टा लिखा है ना, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट, सॉरी देयर एग्जिस्ट y इस साइड रहना चाहिए। देयर एग्जिस्ट y, सॉरी उल्टा लिखा हूँ। यदि तुम y इक्वल्स टू 5 ले रहे हो, देयर एग्जिस्ट y such that for all x means जितने भी all x के लिए ऐसा x है such that it is greater than this 5, ऐसे तो हर टाइम ट्रू नहीं होगा। यदि यहाँ पे हम कंसिडर करें 3 या 1, ये इसके लिए फॉल्स हो जाएगा। सो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दिस देन दिस, ये जो स्टेटमेंट आएगा इसके लिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट से ये जो है डबल इम्प्लाइज वो ट्रू नहीं होगा, ये टोटोलॉजी कभी हो ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई इट कैंट बी, इट्स नॉट अ टोटोलॉजी। ओके, और ये तो देखो ये यहाँ पे दिया है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट आर एक्स एंड एस एक्स वाई, एंड यहाँ पे सिंपली एस एक्स वाई दे दिया है, आर एक्स वाई का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। सो इन दिस केस ऑल्सो here two statements are there, but here only one statement is there, sxy. That's why it cannot be a tautology. यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं कर सकते, so that's why. ठीक है, then consider the C statement for all x there exist y pxy given rxy, और यहाँ पे देखो for all x there exist y. ओके, यहाँ पे देखो p then r है, और यहाँ पे क्या है, सो अभी तो ये फॉर्मूला बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग अभी, p then q, ये सिमिलर स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ p और q। सो यहाँ पे वही चीज़ यूज किया गया है, देखो p then r, दैट इज नेगेशन ऑफ p और r, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ये दोनों क्या है, मतलब कि ये स्टेटमेंट ही दोनों इक्वल है, तो यदि स्टेटमेंट इक्वल है तो ऑब्वियसली डबल इम्प्लाइज रहेगा, ये यदि ट्रू होगा देन ये भी ट्रू होगा, और ये भी फॉल्स होगा देन इट विल आल्सो फॉल्स। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज ए टोटोलॉजी, ये हर टाइम ट्रू रहेगा, और ये यदि ट्रू है, हम यदि कंफर्म है तो इसको चेक करने का मतलब नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, चेक कर सकते हो तुम, बट दिस इज द सी इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को?
एक एग्जाम्पल का सुनो, कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व ऐसे सॉल्व नहीं हो पाते, तो हम कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल्स लेके भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन चेक करो, थोड़ा पहले समझो इस क्वेश्चन को। एक हैश करके एक ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर। इसको इस तरीके से बुलियन वेरिएबल्स पे, अक्सर बाजार बुलियन वेरिएबल्स है, उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो टू स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन, दिस वन, so it is clearly, as you can see, this is the property of the associativity, and this is the commutativity, ठीक है। सो ये दर्शाता है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, और ये दर्शाता है कि एसोसिएटिव है या नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू चेक दैट whether it is that means this operator that is defined, it is whether it is associative or it is commutative or not. Just check it out. नहीं, ठीक है। I think there are many students, but still very few have joined. 2025 students. Okay, so as you can see, this is x hash y, it is equals to x dash plus y dash, where x and y are boolean variables. Okay, so q hash r, let me see whether this is commutative or not. Okay, so what will the q hash r? Q hash r equals to q dash plus r dash, and similarly r hash q, that is equals to r dash plus q dash, and plus sign, that is commutative, we already know, and this is equals to q dash plus r dash. So that's why these two are equal, so we can say that it is commutative. That means s2 is true, s2 is true। तो इसका मतलब d और a कैंसिल आउट हो गया, मतलब अभी तक s2 is true हमें पता है, either both s1 s2 are true होगा, नहीं तो b और c में से कोई एक होगा, ठीक है। So right now check that whether it is associative or not, ठीक है। So p has q has r, that is equals to, so LHS check करो, ठीक है। So p has q, that is equals to p dash plus q dash हैश r, ठीक है। तो हैश बनने से p dash plus q dash होल dash
प्लस RDS, यहाँ पे ये आता है, ठीक है। बट तुम यदि RHS चेक करोगे, P has Q has R आ रहा है, so that becomes is equals to P dash plus Q has R whole dash, ठीक है। राइट नाउ P dash plus Q has R को मैं लिख सकता हूँ Q dash plus R dash whole dash, ठीक है। तो ये दोनों देख लो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यदि तुम जस्ट ए मिनट, ओके, हाँ। So obviously these two are not equal, okay। So क्योंकि ये तुम्हारा जो कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, ये प्लस साइन होके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, so this becomes PQ, okay, PQ plus R dash, but here it will be equals to P dash plus QR, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं है। या तुम यदि तुम्हें डाउट हो रहा है इस तरीके से, तो वन थिंग यू कैन डू दैट, so here LHS not equals to RHS, or you can take a example here, okay। So this will be from here, you can do one example. If you take P equals to 1, Q equals to 1 and R equals to 0, ठीक है। ये चेक करो तो क्या आ रहा है, P equals to 1, so P ds plus Q ds is equals to 0 plus 0 whole dash plus 0 dash, that 0 plus 0 is 0 plus dash is 1 plus 0 dash is 1, ठीक है। So that is 1 only, okay। Then here you will get a 0 dash plus 0 dash, sorry 1 dash, sorry, यहाँ से 1 dash plus Q dash is Q is your 1 dash plus 0 dash, 1 dash is 0 plus 1 dash is 0 plus 1, ठीक है, whole dash, 0 plus 1 is 0 plus 1 plus 0 is 1, 1 dash, that is equals to 0 plus 0, that is equals to 0. So here I am getting 1, here I am getting 0, so they are not equal. This way of proving this is giving the counter example, ठीक है। ओके, सो ये डिफरेंट मेथड्स है इसको सॉल्व करने का। कोई डाउट है किसी को? ओके, ओके, दिस वन ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू इट। मैं 2 मिनट्स दे रहा हूँ, तुम लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूँ।
Okay, anyone try to solve it? कुछ भी पार्ट सॉल्व किए हो इसका? Okay, negation of R और negation of S. ठीक है, यहाँ शुरुआत करते हैं. So here P is your P such that 8 9 10 11 12. ठीक है. So हम जब भी यहाँ पे P then Q बोलेंगे, so that means the numbers which are, that means numbers belongs to this and which are composite in number, composite in case. Okay, so composite मतलब कौन कौन से नंबर composite हैं? तो except 11 all will come. P then Q, this set consisting of that is the numbers which are composite in nature, that is the set will contain 8 9 10 and 12. Okay, now consider this one, negation of R. That means x is number such that x is a perfect square. So among this, which one is the perfect square? Perfect squares. So only one is the perfect square, that is this one 9. So except 9, negation of R. So negation of R, that will be consisting of all the numbers except 9, that is 8, 10, 11 and 12. Okay, fine. Uh, then what will be negation of S? Negation of S. So negation of S is number, x is such a number, is a prime number. Okay. So negation of S means x is not a prime number, that is a composite number. So composite number means it will consist of 8, 9, 10 and 12. 8, 9, 10 and 12. So दोनों का यदि और है, so that means if you take the union of these two, so that will consist of, so and 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, fine. So यहाँ पे and as लोगे तो obviously that will be which are elements that are there here and here. So and means इन दोनों का मिला होगा तो बचेगा except 11 all will come, 8, 9 and 12. Okay, and if you take again negation, complement of this, so obviously one number is there which is complement of this, that's the 11. That means in 8, 9, 10, 12, which number is not there? That is the 11. So obviously the answer is 11. कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay. Okay, try to find out this one.
So I think you know this plus and round symbol. This symbol is for the XOR, exclusive OR. Okay. So exclusive OR for this, I think you know the truth table for this one. That just shortly I'm saying you. If the two statements are there, P and Q, okay, then P plus Q, that will be, it will be 1 1 0 0 1 0 1 0. Then if it is exclusive OR, the table will be like this. That means exclusive OR, that means if one of them is a both cannot be true, or both cannot be false. In that case it will be false. That means 1 1 it will be 0, 0 0 it will be 0. Then 1 must be true. If at least one of them is true, then it is true. Otherwise if all are 0, then it will be 0. Sorry, I'm sorry, wrong I'm saying. That means one must be true, others must be 0. ठीक है, तो जैसे कि सारा यदि 0 होगा, इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी 0. एक हमें ट्रू होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, बाकी सब जितने भी. ठीक है, तो इन दिस सॉरी इट विल बी 1 एंड दिस इट विल बी 1, बाकी केसेस में 0 होगा. ठीक है, ये एक्सक्लूसिव OR का प्रॉपर्टी. फाइन. So now it is saying that x1, x2, x3, x4 all product of this means x1 plus x2 plus x3 plus x4 that is equals to 0. That x1, x2, x3, x4 are Boolean variables. This is the exclusive OR. Which one of the following must always be true. तो क्या हर टाइम ट्रू होना चाहिए? Sir, I think C. Why it is C? I figured out by elimination because Elimination. A Okay. A cannot be true and D and B can also not be true. In that case it will be equal. That's correct. Okay, or else you can take one example that taking all x1 x2 x1 that means here it is, as it is saying that which one is must always be true. तो तुम जो भी केस लो, whatever may be the value of x1 x2 x3 x4, that must always be true and that must satisfy this condition. Okay, so that elimination method that you have tried, that also one idea. Another way you can also figure it out, that if you take all are equals to 1, okay, if you take x1 equals to 1, x2 is equals to 1, x3 equals to 1, x4 equals to 1, in that case it will be what happen, that means this will be false. ठीक है, क्योंकि all are equals to 1 यदि होगा तो obviously x1 plus x2 plus x3 x4 that will be equals to 0. ये जो पहला वाला केस में जैसे बता रहा हूँ अभी. ठीक है, so but x1 plus x1 into x2 into x3 into x4 that is 0, that is false. x1 into x2 that is 1 into 1 plus 1 that is 1, that is not equals to 0. But D case x1 1 plus 1 plus 1 plus 1 that is equals to 1, that is not 0. So ये भी false हो जाएगा. बट ये वाला जो है that is 0 plus 0 that is equals to 0 plus 0. तो यही एक है जो कि हर टाइम तुम कुछ भी वैल्यू लो वो ट्रू हो. बट देखो एक केस के लिए हम पता कर लिए कि सारा फॉल्स है, ये एक ही ट्रू हो, तो इसका मतलब ये ट्रू है. इस तरीके से भी तुम फिगर आउट कर सकते हो. ओके, और कोई डाउट है? ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, दैट इज फॉर योर. एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक या 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया. सो यू जस्ट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ एंड नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क एनीबॉडी. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, चेक कर लो आप कोई.
Okay. I think all of you have taken the screenshot, so today time is up. So any doubt from today's class? No, sir. Okay, any doubt you can ask me in the next class also, no issue. Okay, so I think I'm leaving the meeting right now. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, thank you. Thank you.